So now today's topic is basically simultaneous equation. The meaning of the word simultaneous equation is कि आपके पास हमेशा से क्या होगा कि you always have two equations और two equations के अंदर you have two variables. ठीक है, a set of two or more equations each containing two or more variables whose values can simultaneously satisfy both. ठीक है, now to solve simultaneous equations या उसे start करने से पहले मैं आपको एक चीज जरा explain कर देता हूँ कि यार ये होता क्या है. Now let's suppose you have two lines over there. एक आपके पास एक लाइन ये रही और ये लाइन ये रही, दोनों की इक्वेशंस आपको दी जाएगी. ठीक है, now what is happening is कि whenever you are solving a simultaneous equation you are getting the value of x and you are getting the value of y. Now what are these values? These are the basically the point of intersection. ये coordinates होते हैं उस पॉइंट के जहां पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है, so this is the whole main concept of simultaneous equation. Now to solve a simultaneous equations आपके पास दो मेथड्स है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन. नाउ हियर आर द कंडीशन फॉर एलिमिनेशन. एक पिक्चर मैं आप लोगों को शो करता हूँ. देखो उस पिक्चर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है. जैसे एन एग्जांपल आई थिंक एज पर ये नीड फॉर स्पीड से घर है जहाँ पे एक कार आउट करी out करिए. Basically what is happening is this particular car is getting eliminated. ठीक है, तो यहाँ पे now I want to eliminate one single variable. Single variable means whether I can eliminate or I can eliminate y. कर सकता हूँ. Now how can I eliminate? दो चीजें आपके पास, coefficient must same. Now the main question is what is the coefficient? Coefficient is basically a number which is attached with a variable. यानी कि x के साथ यहाँ पे 2 attached है. This is going to be the coefficient of x. यहाँ पे आपके पास 3 है तो यहाँ पे coefficient 3 है. Second आपके पास क्या बात बोली गई है? Signs must be different. ठीक है, अब now I am looking at this particular equation and seeing that the sign of y is totally different. Now what is happening is कि मैं यहाँ पे ये करूँगा कि 2x but the coefficient is not same. So I write 2x minus y equals to 16. I simply multiply this complete equation by 2. Now what will happen is कि ये आपके पास हो जाएगा 4x, this becomes 2y and this becomes 32. So now it is easier for you to eliminate the value of y. Signs different हो गए और आपके पास दूसरा क्या हो गया? If you look at the particular part, the signs are different, the coefficients are exactly same. तो उससे क्या होगा कि आप इन दोनों को eliminate कर दोगे. So now you will add these two values 4x plus 3x and 32 plus 17. So this becomes 7x equals to 49. So now x is being 7 is being multiplied. So when you shift on that side, 49 divided by 7. So the value is x equals to 7. So that's how you are going to get the value of x. ठीक है, जब आपके पास x की वैल्यू आएगी, now for the value of y, what you need to do? For the value of y, you can even use any of the equation which is written above. आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो. लेट्स सपोज यू आर यूजिंग इक्वेशन 1, so it is written 2x minus y equals to 16. You just need to put the value of x. यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे वैल्यू है 7, so I'm going to write 7 minus y equals to 16, so it becomes 14 minus y equals to 16, so minus y 16 minus 14, so this becomes 2, so y is equals to negative 2. So that's how you're going to get the value of y and x. ठीक है, is it clear? This was elimination method. कोई मसला तो नहीं है? Okay, so now here is another method which is called a substitution. No. The examiner won't specify. देखो वो कभी भी आपको specify नहीं करता कि आप ये वाला method use करो, ये वाला method use करो. What you need to do is कि आप अपनी suitability को देखते हुए, आप अपनी conditions को देखते हुए वो questions को generally solve कर रहे हो. तो ठीक है, मैं जैसे ही हम past paper की questions की तरफ जाएंगे, I'll explain you the whole scenario कि आप कहाँ और कब use करोगे, जहाँ पे वो suit कर रहा हो. ठीक है, ये इस तरह से, लेकिन आपको दोनों methods आने चाहिए. Now what is happening in substitution is कि आपके पास यहाँ पे दो equations है, right? So I have shown one example over here. So what is happening over here is the player is basically replaced by another player. So what is happening is कि ये आपके पास क्या है कि एक substitute यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है? In हो रहा है. So right, what is happening is कि यहाँ पे replacement का एक replace आप कर रहे हो. So now what will I do is कि मैं यहाँ पे target करूँगा equation 1 को. Why am I targeting equation 1?
देखो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आप किसी भी इक्वेशन से बना सकते हो, बट एक आसान सा आपके पास जो आराम से सब्जेक्ट बन सकता है वो वेरिएबल सब्जेक्ट बन सकता है जिसके साथ कोफिशिएंट या फिर वन हो, या आपके पास क्या है कि यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर ना लिखा हो. सो नाउ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पे मैं क्या टारगेट करूंगा, y को टारगेट करूंगा, बिकॉज इट इज वेरी मच इजी फॉर मी टू मेक अ सब्जेक्ट एंड पुट इट इन अनदर इक्वेशन. मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी. सो व्हाट विल आई डू इज कि आई विल शिफ्ट 16 ऑन दैट साइड, 2x - 16 इक्वल्स टू y. तो ये आपके पास क्या हो गया, y यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया. सो y इक्वल्स टू 2x - 16. सो दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन 3. आपने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3 का. ठीक है. नाउ व्हाट विल यू डू इज कि आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 फॉर्म करी थी. सो यू विल यूज इक्वेशन 2 which is 3x plus 2y equals to 17. Now what will you do is कि आप यहाँ पे सिर्फ y को टारगेट करोगे, and what will you do कि in the placement of y आप y को रिप्लेस कर दोगे किस चीज के साथ, आप y को रिप्लेस करोगे 2x - 16 के साथ, and then you are going to get an equation जिसके अंदर आपके पास सिर्फ x नजर आ रहा है. So you'll write 3x plus 4x minus 32 equals to 7. So this becomes 7x. 17 plus 32. This becomes 49. 7x. X equals to 49 divided by 7. So the value of x is going to be 7. ठीक है. So that's how you're going to get the value of x. अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करेगा, because you already made this particular equation, right? आपने equation 3 बना लिया, आपने y को already subject बना लिया. For now to find the value of y, now what you need to do is you're going to use equation 3, y equals to 2x minus 16, and now what will you do कि आप यहाँ पे x की जगह पे, because you already know the value of, because now you already know the value of x, which is 7 in this particular case, so you can easily find out the value of y. So y equals to 14 minus 16. So this is going to be y equals to -2. Okay, so that's how you're going to get the value of x and y. Now again remember one thing, basically what are these things? These are your coordinates जहाँ पे ये दोनों lines आपस में intersect कर रही होंगी. So that's how you're going to solve the two linear equation कभी भी अगर आपके पास आए. ठीक है. Is it clear? यहाँ पे कोई confusion है तो मुझे बता दो, अगर नहीं है तो मैं आगे move करूँ. Okay, perfect. Okay, so these are all of the things which you have already discussed in O-level maths also. तो ये बड़ा सिंपल सा केस है. नाउ अगर मैं एडवांस की तरफ जाऊं तो जनरली वी हैव दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू इज कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज अनदर कर्व. एक आपके पास क्वाड्रेटिक है और एक आपके पास लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है. अब वो दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो व्हेनेवर दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू ऑफ द पॉइंट्स, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है. यूजुअली एग्जामिनर आपसे या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद आपसे एक और सवाल भी पूछेगा कि इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करो. तो ये आपके पास सवाल होगा, वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि ये ए और बी जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये क्या है और ये कौन से पॉइंट्स है. ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि यार यहाँ पे elimination is not possible. So again what you are supposed to do is you are going to get this particular line. अब मैं इसका solution पूरा यहाँ पे solve करना चाहता हूँ. So basically I am going to apply the substitution method. Now I am just noticing one clear thing over here. It's written y equals to x plus 1. So I already know कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि y already subject बना हुआ है and I can replace y with x plus 1. ठीक है. So now what will I do is I'll put equation 1 in equation 2, right? So first will I write equation 2, which is y equals to x square minus 5. So again in the placement of y, मुझे यहाँ पे y नजर आया, तो y की जगह के ऊपर what I need to do is in the placement of y, अब मैं क्या करूँगा, I'll write the equation और equation की जगह मैंने यहाँ पे लिख दी. So I'm going to put the value of y, which is replace कर दूँगा x plus 1 के साथ, right? So that's how I'm going to solve it. So x square minus 5. ठीक है. So now this becomes x plus 1 equals to x square minus 5. I'll shift all of the things on that side.
minus x minus 5 minus 1 equals to 0, x square minus x minus 6. बेटे ये this is going to be form a quadratic equation. जब ये quadratic equation बन जाएगी, so again what you are supposed to do is कि आपको यहाँ पे factorization से आप यहाँ पे आराम से simply solve कर सकते हो. So you are going to write, because there is minus 6 और दो फैक्टर आपके पास क्या हो रहे होंगे, माइनस होंगे. So you are going to write over here. आप यहाँ पे simply लिखोगे minus 3x plus 2x minus 6 equals to 0. You guys have already studied these kind of things in O-level maths also. ये आपने recently पढ़ा. So x यहाँ पे common आएगा, x minus 3 plus 2x minus 3 equals to 0. So x minus 3 x plus 2 equals to 0. एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव 3, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव 2. So these are the two values of x. जब आपके पास दो values x की आ जाएगी, now you are going to find out the value of y. अब y के लिए आपको क्या करना है बेटा? For the value of y, what you are supposed to do, you will use equation number 1 जो आपके पास है, y equals to x plus 1. You are simply going to put the value of x जो आपके पास x की वैल्यू आई हुई थी, वो यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू थी that was 3. So 3 plus 1, the value of y is going to be 4. ये आपके पास 4 आ गई, ठीक है. Now the other value is going to be y equals to x plus 1 minus 2 plus 1. So that is going to be minus 1. This is the second value. ठीक है. अब आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए. यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपके पास आ रहा है a वाला. The a coordinate is minus 2 minus 1 and the b coordinate is b वाला जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है that is going to be 3, 4. ठीक है. तो यहाँ तक ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ सकता है. So this was the whole type of scenario जो आपके पास पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन में फॉल कर सकता है. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो और चैट पे लिख के बता दो कि if there is any confusion, and if it is all clear then we are going to do some sort of questions जो पास पेपर से रिलेटेड है ताकि इस टॉपिक को हम कंप्लीट पूरा कवर अप कर दें. All of you, is it clear? Okay, perfect. Because you guys have already studied these kind of topics, तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी से हो जाएगा. Okay. So now we are going to solve some examples. मैं दो examples आप लोग करवाऊंगा. First of all, okay, perfect. Okay, so now I'm solving this particular part of example. अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि you have one simultaneous equation in front of you. Like now, what is happening over here is कि it's written 4x minus 3y equals to negative 10, and you have 2x plus 5y equals to 21. Now, अब देखो इसके अंदर अगर मैं substitution को follow करा दूँ तो मैं fractions की तरफ चला जाऊँगा. So I'll try to avoid that. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका सवाल था, आप ये पूछना चाहते हैं कौन सा मेथड मैं किस तरह से अप्लाई करूँ. तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन बड़ा आसान है बिकॉज दोनों लीनियर इक्वेशंस है, राइट. So what I am supposed to do is कि यहाँ पे I am observing y, so I am going to just multiply this particular part by 5 और ऐसे मैं completely multiply करवा दूंगा किसके साथ बेटा, 3 के साथ. So now what will happen is 5 multiplied by 4. So when you multiply 5 by 4 it becomes 20x. ठीक है. So it becomes minus 15y minus 50 and 3 into 2 it is going to be 6x and 3 into 5 it becomes plus 15y. And 3 multiplied by 21 that is going to be 63. So that's how you're going to solve it. ठीक है. अब आपने ये तो कर लिया. So now what will happen is, as you can see here दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और आपके पास यहाँ पे y और सारा आपके पास साइंस वगैरह भी डिफरेंट है. you're going to do just cancel out और आपके पास ये eliminate हो गया. So this is going to be 26x and ये अगर आप यहाँ पे करते हो 63 minus 50, so that is going to be 13. So that's how you're going to get the value of x, which is going to be 13 divided by 26, and that will be 1 over 2, right? So this was the value of x. Now, अब it's totally on you कि आप equation 1 use करो, equation 2 use करो, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक certain equation ले लो, आप वो use कर लो. So you are using, let's suppose आपने बोला कि यार I'm using equation number 1, आप 2 भी use कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आंसर आपके पास exactly same आएगा. You're going to write 1 over 2 minus 3y minus 10 is
इसको जरा आपने सिंप्लीफिकेशन करी तो इट बिकम्स 2 minus 3y minus n minus 2 नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से हो गया और y is equal to 12 divided by 3 so is going to be 4 ठीक है so that's how you're going to get the values of these simultaneous equations right अब देखो ये तो एक सिनेरियो मैंने करा दिया अब मैं एक और सिनेरियो की तरफ मूव कर रहा हूँ okay now this particular part अब देखो इसके अंदर I have a choice whether I can use elimination also उसमें भी है यूज कर सकते सब्स्टिट्यूशन लेकिन मैंने हैसल को अवॉइड करा मैंने क्योस को अवॉइड करा और मैंने कहा जो मेरे लिए कन्वीनियंट है आराम से होता है अब यहाँ पे व्हाट विल आई डू आई ट्राई टू मूव ऑन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन क्योंकि यहाँ पे आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग वन थिंग कि देयर इज एन एक्स ओवर हियर तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसके साथ 1 अटैच्ड है कोई और नंबर हमारे पास नहीं सो आई विल ट्राई टू मेक दिस थिंग एज अ सब्जेक्ट सो x इक्वल्स टू 19 + 5y ठीक है सिंपली ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म कर दी so this is going to be my equation 3 right so now what will I do I'll write equation number 1 3x plus 2y equals to 23 now what will I do is I'll try out just write 19 plus 5y equals to 23 now 3 multiplied by 19 we are going to get 57 plus 15y plus 2y equals to 23 this becomes 17y 23 minus 57 17y 23 minus 57 that is going to be minus 34 so the value of y is going to be minus 34 divided by 17 negative 2 so you have already got the value of y beta अब y की वैल्यू के बाद आपको क्या करना है कि बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपकी इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ऑलरेडी आपको पता है x ऑलरेडी सब्जेक्ट बन चुका है 19 plus 5 है you just need to put the value of y in this particular part minus 2 19 minus 10 so it is going to be 9 ठीक है now we will try out to solve this particular part ये अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं और there's a question from ये है आपके पास जून 2011 पेपर 22 का आपके पास सवाल है so now in what is happening in this particular part is the examiner आपसे कह रहा है कि line y equals 3x minus 9 intersects the curve एक कर्व है आपके पास 49x square minus y square plus 42x plus 8y equals to 247 at the points A and B so these are the 2 points जहाँ पे आपके पास ये कर्व क्या कर रहे हैं आपस में intersect कर रहे हैं right at 2 particular points अब जब ये आपके पास 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है सो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है यू अगेन नीड टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली ताकि आप इसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकें ठीक है सो नाउ अगेन बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज 49x square minus y square plus 42x plus 8y equals to 247 and जहां जहां हमारे पास यहाँ पे y नजर आ रहा है so what we are going to do we are going to put the value of 3x minus 9 हम यहाँ पे put कर देंगे ठीक है so I am going to write 49x square minus y this is 3x minus 9 whole square plus 42x plus 8 3x minus 9 equals to 247 so this becomes 49x square और ये आपके पास completely if you open the bracket so this becomes 9x square minus 2 into 3 into 9 so it becomes 54x plus 81 now this is going to be 42x 8 into 3 it becomes 24 x 8 into 9 it is 72 equals to 247 ठीक है अब आप यहाँ पे क्या करोगे 49x square minus 9x square plus 54x minus 81
प्लस 42x प्लस 24x माइनस 72 इक्वल्स टू 247। जरा इत्मीनान से इसे सॉल्व करना। देखो सबसे पहले व्हाट विल आई डू इज कि मैं इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दिस बिकम्स 40x स्क्वायर, राइट। उसके बाद आई ट्राई आउट टू टारगेट। मैं क्या करूंगा, x वाली चीजों को जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि x वाली जो चीजें हैं वो हमारे पास ये रही, ठीक है। सो वी हैव अ प्लस 54 एंड देन वी हैव 42 and then we have a 24x, right? So what we are going to do is 54 plus 42 plus 24, इनको जब आप आपस में add up कर दोगे, so you are going to get plus 120, right? Then you have negative 81 and negative 72, दोनों आपस में जब add up हो जाएंगे, so you are going to get 153 negative 153 minus 247 equals to 0. There is going to be 400, right? ठीक है। अब नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि यार यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू विल डिवाइड दिस होल थिंग बाय 40। अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो बेटा जब आपने 40 से डिवाइड कराया, सो दैट इज गोइंग टू बी 3x and that is going to be 10, and now you will try out कि आप इन्हें फैक्टराइज करो। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने जरा इनको फैक्टराइज वगैरह करवाना है। सो x स्क्वायर प्लस 5x minus 2x minus 10 equals to 0. Again, you will take the common between the first two term and the last two term. X plus 5 minus 2, x plus 5 equals to 0. X minus 2, x plus 5 equals to 0. So the first value is going to be x equals to 2. Let's put x minus 2 equals to 0, x equals to 2, x plus 5 equals to 0. देखो नाउ यू हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यूज ऑफ x। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप बेटा y की वैल्यूज के लिए ट्राई करोगे। सो बिकॉज फॉर द वैल्यू ऑफ y यू आर गोइंग टू यूज फॉर y, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है व्हिच इज y इक्वल्स टू 3x minus 9, y 3x minus 9, you are going to put the value of x। आपने x की वैल्यू को सिंपली यहाँ पे पुट करा 6 minus 9, so y is going to be negative 3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पार्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेटा, आप यहाँ पे क्या करोगे, ओके यू आर जस्ट गोइंग टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग y इक्वल्स टू 3x minus 9, आपने यहाँ पे पुट करना है 3, then you have minus 5 minus 9, this is going to be minus 15 minus 9 and that is going to be minus 24. So these are the two coordinates जो आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, राइट। सो आप यहाँ पे बोल दो कि भाई ए वाला जो कोऑर्डिनेट है, अब आगे का जो प्रोसेस है सवाल का वो तो आपको आज फिलहाल नहीं करना, बट यू आर गोइंग टू नोटिस दिस वन क्लियर थिंग कि आपको पता है कि यार ए वाला जो कोऑर्डिनेट है -5 और you have -24 and then for the coordinate of b you are going to get 2 minus 3। तो ये आपके पास a और b के coordinates आ गए। So that's how you're going to solve these kind of particular questions। अगर कोई आपको confusion है further तो please मुझे बता दें, ठीक है। Is that clear? Solve these kind of questions, ठीक है। आज हम यहीं पे रखते हैं and what will I do is कि I'll give you a homework। I am giving you this complete file। देखो ये पूरी फाइल आपके पास आ रही है। It contains a lot of questions। ये अराउंड इसके अंदर 10-12 सवाल हैं। So what you are going to do is कि आप इसे जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो and if there is any further confusion then please मुझे आप प्लीज बताएं और कोई भी मसला हो तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कर दिएगा, तो आई विल आंसर योर क्वेरीज फॉर एनीथिंग, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू यहीं पे रखते हैं। आज हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू डू अ क्लास, या फिर हम इस कल परसों कर लेंगे या हम नेक्स्ट वीक के एंड में जरा हम देख लेंगे।